मेरे साथ हुआ था आफ्टर राइट। द फर्स्ट टेक्निकल, मुझे लगा कि इसमें मेरा नहीं होगा। Hi everyone, welcome back to Learning Bridge. I hope you guys are doing good and staying safe. तो वापस आ चुके हम एक और नए इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ में। इस सेशन में हमारे साथ है कुशल विजय। गाइस, कुशल के लिए इंटरेस्टिंग बातें बोलूं तो वो सीएस स्ट्रीम की तरफ 11th स्टैंडर्ड से अट्रैक्ट होने लगे थे। उसके लिए उन्होंने पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर दिया था, बट जब उनका जेई वगैरह क्लियर हुआ तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें सीएस स्ट्रीम नहीं मिल पाई। उनको स्ट्रीम मिली ईसीई। उन सब के बावजूद उन्होंने इस चीज को कभी ब्लॉकर नहीं बनने दिया, ये चीज कभी हर्डल नहीं बनी उनकी सक्सेस के बीच में। उन्होंने खूब मेहनत करी एंड इधर उधर से बहुत ज्ञान बटोरा, अपने पैशन को फॉलो करा एंड फाइनली उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप क्रैक करी एंड भाई पीपीओ भी ले लिया। तो कुशल ने पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा है गाइस कि कैसे उन्होंने इतना सारा ज्ञान बटोरा, कहां कहां से कौन से रिसोर्सेज से पढ़ाई करी, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोसेस क्या होता है, कैसे पूरी तैयारी करी, हर एक राउंड के बारे में सब कुछ उन्होंने हमारे साथ शेयर करा है। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना एंड अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड भाई 5K टच करना है बहुत जल्दी, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप ऑन टू द सेशन। Hey, hi Kushal. Welcome to our show. It is our pleasure to have you on our channel. First, I would ask you to just to give an introduction about yourself and how has your journey been so far. So first of all, pleasure is all mine, Shashank. Thanks for having me here. And so I'm Kushal Vijay, and I'm pursuing my BTech at NIT Jalandhar in with electronics and communication as my major. So in 2017, I got into one of the prestigious institute of India, NIT Jalandhar. And recently, I got a full-time job at Microsoft, which is an extension to my internship there. पैसा ही पैसा होगा। So this is all about me. Big congratulations to you for getting your dream job in Microsoft. How did you get this opportunity to interview with Microsoft, and if it was off campus or on campus, and how did you apply for that? And yeah, So- how did you prepare your resume? Microsoft came to my campus. It was an on-campus interview. I got the opportunity when Microsoft visited after the completion of my second year. In the Okay. first week only, it comes in the in the first week of my third year. How the resume? So there is a conception like you need to be good at competitive coding, or you have to have very good projects. But what I suggested, you have to maintain a balance between them. क्योंकि बैलेंस जब होता है तो यू आर गुड टू गो. संतुलन बहुत जरूरी है संसार में सर। So this is my Right. strategy because I'm not that good in competitive coding and I'm not that brilliant in making projects, but I maintain a balance between the two. So this is the thing that I followed in building in my resume as well. This is my strategy to audience out there. हर चीज का बैलेंस एंड संतुलन बना रहना चाहिए, तो ही Yes, yes, अच्छा yes. इम्पैक्ट आता है। हाउ इज द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ इंटर्नशिप लाइक फॉर माइक्रोसॉफ्ट? कितने राउंड्स होते हैं एंड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं? So Microsoft follows an amazing process to hire interns as well as the full time. उनका process जब हमारे कॉलेज में आए थे तो 3 दिन में डिवाइडेड था. The first Okay. day was for the online test, the second day was for group fly round, and the third day was of the technical interviews and the HR interviews. So on the first day we had the online test where around 180 students from all the circuitry branches and all the CS related branches, and then after shortlisting from that online test, we got to sit in the group fly round where we have been given Okay. 2 questions. The pattern for the group fly round vary from college to college, I would say, or batch to batch, because there is no specific pattern for that particular. In my case, we have been given a question which is pattern related, and the other question was related to designing. And what my tip to the Okay. students for this round will be, the thing that they want is to Yeah. interact. तुम कितने ज्यादा बात कर पा रहे हो, कितने अच्छे से अपने थॉट प्रोसेस को उन तक पहुंचा पा रहे हो, ये बहुत जरूरी होता है ग्रुप फ्लाई राउंड में. आफ्टर दैट आई हैड 2 technical interviews and then 1 HR interview. After the group fly, we had 14 students left. After the first technical, we had 8 students left. After the second technical, we had 7 students left. Okay. And after the HR round, we had only 6 students and who got the internship. In the online test, Microsoft ने multiple sets बनाए थे questions के, and they cover all the topics from data structure. For my case, the first question was from mathematics, the second question was from dynamic programming, and the third question was from strings.
and that to string algorithms, and it was based on Rabin-Karp algorithm. Okay. And when I talked to Okay. my other fellow friends, so they told me the question were from matrices, the question was from stacks and queues. So all the CS fundamentals, data structure were covered. In my first technical interview, I have been grilled upon the solution that have been provided in the group fly round. मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ग्रुप फ्लाई राउंड में सबसे पूछा गया था, एक सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन. सो ऑल Okay. दे डू नॉट वांट एनी कोडिंग इन दैट. ऑल दे वांट इज तुम कितना सोच पा रहे हो सोल्यूशन के पीछे, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है. Right. और उसमें जो मेरा सोल्यूशन था वही मेरे आगे के दोनों टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू में उसी के ऊपर मुझे ग्रिल करा गया था कि तुमने क्या सोल्यूशन सोचा, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी. तो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली जजेस यू ऑन ऑल द टॉपिक्स लाइक योर कम्युनिकेशन, your data structures and algorithms, your thought process, how you actually thinking about the problem. There could be a chance that किसी का दिन अच्छा नहीं हो तो उसका एक इंटरव्यू अच्छा नहीं गया. तो ये मेरे साथ हुआ था. Right. आफ्टर द फर्स्ट टेक्निकल मुझे लगा कि इसमें मेरा नहीं होगा. चल झूठा. Because in one of the question I told him that I don't know about this answer because I have never heard about the topic. So I thought मेरे को आंसर नहीं आता था तो मैं नहीं होऊंगा select. But I got selected. I got transferred to the second technical interview. So I think they judge on everything. एक बार इंटर्न लग गई, ठीक है, दैट इज फाइन. इसके बाद आता है बड़ा स्टेप कि इंटर्न लगने के बाद एक्चुअल कंपनी में किस तरीके से चीजों को करना है टू कन्वर्ट इट इनटू अ फुल टाइम ऑफर. एंड जब एक इंटर्न जाता है कंपनीज में तो वहां पे क्या उसकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. तो सबसे इजीएस्ट Yeah. वे जो है एक टेक जाइंट में जाने का वो इंटर्नशिप से पीपीओ लेना ही है. और इस बार जैसे कि वर्चुअल था सब कुछ, लाइक द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एवरीथिंग राइजेस टू I think 200% because COVID was Correct. going on and we were in the fear like conversion rate will go down or something like that. What I believe is you need to interact a lot. You need to communicate with the your peers, your team members, your manager, your mentor. उनसे बहुत बात करो, उनसे सवाल बहुत ज्यादा पूछो रिलेवेंट तुम्हारे प्रोजेक्ट से. बी क्यूरियस, बिल्कुल एनर्जी मेंटेन रखो. वन थिंग दैट माय मैनेजर मेंशन्ड वाज एनर्जी लेवल वाज मेंटेन ड्यूरिंग all the 8 weeks. It's not like you have to ask a good question. Your question can be silly enough. कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. तुम क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता. तुम छोटा क्वेश्चन पूछो या बड़ा क्वेश्चन पूछो, उससे तुम्हारे डाउट्स क्लियर होते हैं. तो क्वेश्चन बहुत पूछो एंड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क. इवन दो वर्क फ्रॉम होम है, हम उसे फॉर द सेक ऑफ डूइंग नहीं करना चाहिए. उसको पूरी डेडिकेशन से करो, अपना प्रॉपर टाइम दो. इट्स नॉट लाइक कि अब कोई 9 बजे ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रहा है तो तुम लेट उठो और ऐसा कुछ. बी ऑन टाइम. उससे सामने वाले को लगता है यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द कंपनी और तुम्हारा कोई गोल है, रोल है कंपनी के टुवर्ड्स. यू फील सो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर तुम टाइम टू टाइम अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो, डेली बेसिस पे उन्हें अपडेट दे रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज है. मैं एक और एडवाइस ये रहेगी कि जो तुम्हें काम दिया गया है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करो. That will be like cherry over the top of your ice cream because my manager asked me to document the things and I followed a different procedure which is not conventional. So he liked it very much and he appreciated me for that because yeah, we have to go with the road which is less traveled. और ये बहुत अच्छी Yeah. चीज है और यही करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ही तुम क्राउड से हटकर तो ऐसे ही निकल पाओगे. देन बस फिर पीपीओ आ गया. That's correct. You are from like BTech EC, right? And had no programming background like during your courses, or you can say basically a curriculum. So कौन सा ऐसा टाइम था जब थोड़ा सा आप इन लाइन हुए CS स्ट्रीम की तरफ से? ऑल्दो ठीक है, कॉलेजेस में चांसेस मिलते हैं लोगों को प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए, बट एक खुद का इंटरेस्ट भी होता है. यस, आई एम रियली इंटरेस्टेड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोफाइल्स. तो कब वो एक ऐसा टाइम था, कैसे फिर अपने आप को आपने प्रिपेयर करा फॉर गुड कंपनीज? Yeah. So my journey in computer science started when I was in class 11 because my cousin was in a software company and she used to build Android apps and those Android apps fascinated me when I was in class 11. तो तब से ही मेरी जर्नी शुरू हो गई. मैं although मुझे कुछ आता नहीं था but I used to watch videos on YouTube and build Android apps. So and after that when I used to build those things and my father used to see them, so that and he was so happy. वो बहुत खुश होते थे कि मेरा बेटा एक्चुअली कुछ कर रहा है जो मुझे दिख रहा है. So that was one of the motivation for me and after that the journey accelerated. Although मेरे को कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिली लेकिन वो मेरे लिए कभी भी एक ड्रॉबैक नहीं रहा
और मैं कहूँगा मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। माय सीनियर्स really helped me a lot. They guided me throughout my second year. So I started doing the competitive programming and learning data structures and algorithm from a second semester onwards. And all thanks to Nice. my seniors because they guided me throughout, and the journey goes on. I have seen your LinkedIn profile. You have been GCI mentor, ACM ICPC regionalist. CS बैकग्राउंड से ना होते हुए भी कैसे ये सब चीजें आपने करी, मतलब कैसे इन चीजों की गाइडेंस मिली एंड कैसे आपको इन चीजों के बारे में पता लगा एंड आप इनमें पार्टिसिपेट करते थे? I can, narrow down all the stuff into one thing. That is how I come to know about these things is interacting with Yeah, people. Interacting with correct. people will help you to, know others' perspective about the stuff. So it will definitely Yeah. help you to grow. And good social media platform, I would say, like मस्त जोक मारा रे like LinkedIn or Twitter. Seriously, people who are there in the industry used to post a lot of stuff and they are ready to help you. They are ready to, like Yeah. you are helping the community a lot. You are, encouraging students to be like you. You are in a, tech giant Amazon. That's really amazing. And that's really inspiring to others through LinkedIn and through my seniors as well, Yeah. who have given the ACM ACPC, the examination and who are being into various community programs like Google Coding. So they used to guide Yeah. me and yeah, I was able to get that guidance because मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया। आपको खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कोई आपके सामने से नहीं Correct. आएगा। आपको खुद जाना पड़ेगा उनसे बात करने। इवन दो वो आपको इग्नोर करें शुरू में शायद, बट they'll listen to you, they'll help you because वो भी busy हैं, उन्हें भी जॉब चाहिए, but they'll definitely help you. So keep the patience and the journey will follow. Like what is your opinion about this tier 1, tier 2, tier 3 tag? क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है जो मैं बहुत थोड़ा अवॉइड करता हूँ छेड़ना। मैं बहुत लोगों की जो मिथ हैं, मैं लोगों के सामने डिफरेंट डिफरेंट लोगों का थॉट एक्चुअली प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि वो क्या सोचते हैं एक्चुअली। So, to sum up, I would say hard work is the thing that actually matters. Obviously, tier one students or tier two students have lesser number of people to compete with than the Yeah, tier three college because they have to, compete with a large number of crowd, I would say. But if they do, correct. if they are dedicated, if they have the courage to fight them, then the journey will follow. And like it's not like tier one or tier two student are privileged. They are privileged because they have done the hard work, in the first place while giving the JEE. So it's not like one should create a negative picture of them. They are privileged child or something. They Yeah. have done the hard work, and you can also do the hard work, and eventually you will fall in the same place. That is the tech giant. You were preparing for your interviews or say preparing for coding and programming. So what good learning resources did you follow to basically strengthen your skills? Okay, first of all, I have never spent a single penny over any paid courses. People used to spend a lot of money. It's not like they are bad or something. You can prepare without paying, even a single penny. So there are Yeah. enormous resources out there on the internet. It's just a search away, I would say. The YouTube is, filled up with so much of content. It's just that you need to explore the stuff. If I pinpoint some of the people who are contributing to the community are Rachit Jain, Gaurav Sen, Tushar Roy. These are the people who are really contributing to the community. And even Yeah. you have started your channel, The Learning Bridge. It's been amazing, and hope the channel grows. GFG is the one place where all the software engineers, I would say, will land first of Yeah. all, Yeah. and all the internship aspirants first start their journey from CodeChef. It's an Indian Yeah. platform and it's really amazing. It's growing really amazing, and InterviewBit is also very helpful. So during my interviews or before my interviews, I used to spend a lot of time at Geek4Geeks and InterviewBit. Okay. So those are very helpful. What kind of projects you worked upon in your college time and like how did you get a chance to learn those new technologies? So since my second year, I Okay. started the strategy of learning a new thing
in the span of 6 months. So I dedicate 6 months of my college to a particular tech stack. 6 months I have given data structures and algorithms. Another 6 months I have given to web development. Then I have given my 6 months to natural language processing. So I'm continuing my in my journey with natural language processing and web development in my hand in hand. If you design a roadmap for you, because there are enormous amount of things present there. You can go for machine learning, deep learning, natural language processing, Android development, web. There are a hell lot of things. So one is always, everyone is confused what to choose and what to not. If there is a scope of this in future or not. It's not like that. Give a specific amount of time to a particular technology stack so that it's not like you have to give your entire life to a particular tech stack. Your attitude should be like keep on learning new things, and that will help you in future as well. So this is a strategy that I follow. Like for a guy who's not from a CS background, since day zero, what should be the proper learning roadmap for him or for her? First of all, college तो अच्छे से enjoy करो, because if you get into NIT or IIT or any other college, definitely वो life बहुत amazing होती है. तो अपना time हर चीज को divide करो, पढ़ाई को भी, because if you are not from CS background, तुम्हें वो सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे जो तुम्हें शायद कभी काम भी ना आए और तुम्हें इंटरेस्ट भी ना आए उनमें. So what I used to do, I know it's bad, but you can crack any of your college exams in 10 days or so. So if you can clear your exams in 10 days, you have enormous amount of time left for other stuff that you can do. So I used to follow this strategy, and and believe me, you can maintain a good CG while preparing for in 10 days if you have good friends. From the first day, you should start with a good programming language first, and it will be good if it is a object-oriented programming language. After getting command over a programming language, you can start with data structures and algorithms. So this is the second step. After getting command over data structures and algorithms, you can either jump into competitive programming or you can start with projects, good projects, I would say. And it's not like you can start with a project and it will be an amazing project. You will start step by step, a small, a bit larger, and then a brilliant project at the end of the time span you have given to that project. This is how the journey follows. And once you try everything like competitive programming and projects, you'll get to know what you are interested in. And after getting an internship or a job, you're free to do anything. If you're interested in competitive coding, you can go in that particular direction. If you're interested in development, you can build the thing that you want. So this is the thing that I will suggest to the juniors. तो काफी अच्छा लगा आपने जो भी एक्सपीरियंस शेयर करा कुशल हमारे साथ, एंड आई रियली होप दिस इज गोना हेल्प टू मेनी नंबर ऑफ पीपल. सो फ्रॉम आवर साइड अ रियली बिग थैंक यू टू यू फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइसेस, एंड a very good luck for your future with Microsoft. Thank you Shashank, and thanks for having me. और मैं चाहूंगा कि सबसे जो भी मैंने चीजें बोली है उससे थोड़ी आई विश ये तुम सबको हेल्प करे. और अगर कुछ गलती हो गई तो आई एम रियली सॉरी इफ एनीबडी इफ आई ऑफेंडेड समवन. I just put down split it out my thoughts. That's it. And thanks for all the wishes, and I hope all the best to you too. That's it for today's video guys. I hope कुशल के साथ वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड जो भी एक्सपीरियंस कुशल ने शेयर करा है फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंड जो उनका लर्निंग रोड मैप रहा है, आई होप ये आप लोगों को हेल्प करेगा. एंड आप लोगों के कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो जस्ट फील फ्री टू पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगेन जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. मिलते हैं अगले एक्सपीरियंस के साथ जल्दी ही. तब तक के लिए जस्ट स्टे सेफ एंड स्टे होम.